ठीक है, तो यूनिट 6 करते हैं। यूनिट 6 ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग विच इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो यूनिट 6 वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में तो देखते क्या है। व्हाट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन? वायरलेस कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन between two or more devices without the use of physical cables or wires. सवाल तो वायरलेस कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल केबल्स और वायर्स। तो फिजिकल केबल्स और वायर्स नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर एयर वेव्स which allows us to stay connected from virtually anywhere because एयर तो हर जगह, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ पे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, it has led to the development of IoT applications which are heavily reliant on wireless communication. IoT devices are heavily reliant on wireless communication. Examples of wireless communication technologies: Wi-Fi wireless होता है, uses radio waves to provide high-speed internet and network connection. Bluetooth short range wireless technology that is used for connecting devices such as smartphones and laptops. Cellular networks allows for voice and data communication using mobile devices such as smartphones. Satellite communication uses satellite to transmit data over longer distance. RFID uses radio waves to identify and track objects. अभी क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, IMP। ट्रांसमीटर्स होता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर हो गए जो डेटा ट्रांसमिट करेंगे, encodes the information to be transmitted into suitable transmitting and transmitting it over air through an antenna. तो वो डेटा, उनका मेजर काम क्या है? डेटा को एनकोड करना। ठीक है, मेजर काम क्या है? encodes the information, generates a radio frequency alternating current that is then applied to the antenna. Generates radio frequency alternating current. अभी रिसीवर का काम क्या है? टू डी कोड। अगर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है, अरे मैं रिसीवर बोला, एंटेना पे क्यों आया? रिसीवर इज अ हार्डवेयर मॉड्यूल दैट डिटेक्ट्स द ट्रांसमिटेड सिग्नल यूजिंग एंटेना एंड देन डीमॉड्यूलेट्स द सिग्नल टू एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। तो हार्डवेयर मॉड्यूल है, डीमॉड्यूलेट सिग्नल टू एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। अभी आते हैं एंटेना पे। एंटेना क्या बोल रहा है कि antenna transmits and receives the radio frequency signal over air. Antenna is literally a device that can transmit and receive radio frequency over air. ठीक है, antennas can be designed to focus the radiation pattern of electromagnetic waves. Antennas can be designed to focus radiation pattern of electromagnetic waves, which can improve the signal quality and reduce interference from other sources. Which can improve the signal quality and reduce interference from other sources. They can also use to amplify weak signals and filter out unwanted signals. तो antennas can identify weak signals, मतलब ये छोटा weak signal आ रहा है और उसको amplify करके वापस आगे भी forward कर सकता है. Antennas with higher gain can increase the range of wireless communication. Antennas with higher gain can increase the range of wireless communication, allowing signals to be transmitted and received over long areas. अगर कोई एंटेना है जिसका गेन लार्जर है तो अगर पॉइंट ए पे प्लेस्ड है तो वो सिग्नल को एम्पलीफाई करके इट कैन ट्रांसमिट इट टू अ लॉन्गर डिस्टेंस। अगर पॉइंट बी है, filters used to eliminate unwanted signals that may be present in the transmitted or received signal. Used to eliminate unwanted signals that may be present in the transmitted or received signal. It eliminates noise and interference, and to ensure that signal is being transmitted or received is the desired frequency range. Amplifiers used to increase the strength of the signal so that it can be transmitted over a long distance without losing its information. Used to increase the strength of the signal so that it can be transmitted. तो एम्पलीफायर का काम क्या है? एम्पलीफाई करना सिग्नल को। ये आते हैं मिक्सर्स पे। यूज टू कंबाइन, अभी देख फिल्टर क्या करता है? इट फिल्टर्स आउट वीक नॉइजेज एंड सिग्नल्स
एम्पलीफाई क्या करता है, छोटे सिग्नल को बड़ा करता है। मिक्सर क्या करता है, दो सिग्नल है, मिक्सर दो सिग्नल को कंबाइन कर देगा। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन एंड इज ऑफन यूज्ड इन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। ब्लूटूथ इम्पॉर्टेंट है बट नॉट ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ इट। अभी थोड़ा अच्छे से लाइन्स मारता है। So different frequencies to produce a new signal, that is sum of the that is sum or the difference। अभी तेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है 100, दूसरा फ्रीक्वेंसी है 20, तो एक सम फ्रीक्वेंसी आ सकता है 120, या तो एक डिफरेंस फ्रीक्वेंसी आएगा 80। ब्लूटूथ इम्पॉर्टेंट बट नॉट ऑल। Bluetooth is a network technology that connects mobile devices wirelessly over a short range from personal area network। Bluetooth एक छोटे एरिया में Bluetooth is a network that connects mobile devices wirelessly over a short range to form a personal area network। personal area network बनाता है छोटा, ठीक है। They use short wavelength, ultra high frequency radio waves within the range of 2.4 to 2.485 GHz for wireless communication। Bluetooth usage, Bluetooth किधर यूज़ हो रहा है अभी? Bluetooth is used to access points for data and voice। Bluetooth is used to access points for data and voice। Real-time voice and data transmission are provided by Bluetooth connection station and portable network devices। Access points for data and voice, cable replacements, Bluetooth replaces the need for large number of wires and cables of wire। Bluetooth replaces large number of wires and cables of wired networks, ठीक है। The connection can be made instantly and retained even when the devices are not within the range। Connections can be made instantly and retained even when devices are not within the range। The range of the device is typically 10 meters। However, the range can be extended by using amplifiers। अभी ad hoc networking, Bluetooth networks are ad hoc in nature। ad hoc तो अपन ने यूनिट, कौन सी यूनिट में देखेंगे अपन ad hoc? ad hoc is in यूनिट 8। ad hoc मतलब ऐसा नेटवर्क जो किधर भी फॉर्म हो सके। इट इज़ वेरी डायनामिक, इलास्टिक इन नेचर एंड टेम्पररी। ad hoc in nature since a Bluetooth enabled device can form an instant connection with another Bluetooth enabled device as soon as it comes into its range। Bluetooth किस में अवेलेबल है? लैपटॉप्स, प्रिंटर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में। क्या क्या करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? ट्रांसफर फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम सेंसर डिवाइस टू सेंसर मॉड्यूल, सेंसर नोड्स। प्रोटोकॉल्स एंड ब्लूटूथ स्टैक, क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं ब्लूटूथ स्टैक में? ब्लूटूथ स्टैक में एक होता है कोर प्रोटोकॉल्स, मतलब these include Bluetooth radio, baseband, link, manager protocol, LMP। कोर प्रोटोकॉल्स मतलब ऐसे प्रोटोकॉल्स जो ब्लूटूथ को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। बेसबैंड हो गया, लिंक मैनेजर हो गया, लॉजिकल लिंक कंट्रोल हो गया, अडेप्टेशन प्रोटोकॉल हो गया, सेंसरी सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। मतलब ऐसा एक तो तू बेसबैंड डिफाइन करेगा तेरे ब्लूटूथ का, लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए, लॉजिकल लिंक कंट्रोल होगा, अडेप्टेशन प्रोटोकॉल होगा, और सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल की अवेलेबल है या नहीं ब्लूटूथ डिवाइसेस। केबल रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल मतलब जो तेरे को एक्चुअली तो डेटा केबल से भेज रहा था, अभी तू केबल को रिप्लेस करके तो ब्लूटूथ यूज़ करेगा ना, तो अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे डेटा ट्रांसमिट होगा। These include radio frequency communications, RFC communication protocol। It is short for radio front end component। Adopted protocols, these are protocols that are adopted from standard models। The commonly adopted protocols used in Bluetooth are point-to-point protocol, Internet protocol, user diagram protocol, transmission control protocol, and wireless application protocol। ऐसा लग रहा है मैं बस पढ़ रहा हूँ ये वाला पार्ट, बट adopted protocols are basically protocols that are derived from other communication standards।
So they are derived adopted from standard models. The commonly adopted protocols used in Bluetooth are point-to-point protocol (PPP), Internet Protocol (IP), user datagram protocol (UDP), ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एंड वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. तो ये सारे प्रोटोकॉल अपन यूज़ करते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड इंटरनेट में, विच आर अडॉप्टेड टू ब्लूटूथ इन वन वे और अदर टू वर्क फॉर ब्लूटूथ. AT commands, attention command set. AT commands is attention command set. तो WAP हो गया, TCP हो गया, IP हो गया, PP हो गया, ये सारे क्या हुए? All of these are your standard protocol. ठीक है, ये सारे तेरे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हो गए. AT commands हो गए, attention command set. SDP was standard. SDP service discovery protocol. क्या ये क्या है? सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल. ठीक है, तो इधर अपने पास है RF कॉम, ऑडियो, L2 CAP, LMP, बेसबैंड, ब्लूटूथ स्टैक. बेसिकली ब्लूटूथ स्टैक, इसको ज़्यादा याद वाद नहीं करोगे तो भी हल्का चलेगा. फंक्शंस ऑफ कोर प्रोटोकॉल. रेडियो deals with the physical transmission of data via radio waves. It specifies the air interface, frequency bands, frequency hopping methods, and modulation techniques used for communication. Baseband builds on the radio protocols by defining how data is formatted into packets, addressing schemes, timing of transmission, algorithms for power control to manage power consumption efficiently. Link Manager Protocol (LMP), responsible for establishing and managing logical links between Bluetooth devices. It handles tasks like device authentication, encryption of messages, and negotiation of packets to ensure secure and efficient communication. Logical Link Controller Adaptation Protocol (L2CAP) acts as a bridge between higher layer protocols and baseband layer. It adapts upper layer data packets into a format suitable for transmission over the baseband layer. L2CAP supports both connection-oriented and connection-less services, enabling various types of communication. Service Discovery Protocol (SDP) facilitates the discovery of services offered by Bluetooth devices. It allows devices to query each other for information such as available services and device capabilities, helping in establishing connection between devices for specific purposes. Bluetooth Frame Structure (IMP). ब्लूटूथ फ्रेम स्ट्रक्चर 3 पार्ट पे डिवाइडेड है. पहला पार्ट है एक्सेस कोड्स, ये एक्सेस कोड. दूसरा है पैकेट हेडर और तीसरा है पेलोड. तो अभी एक्सेस कोड में क्या है अपने पास? प्रीएम्बल, सिंक, ट्रेलर. एम पैकेट हेड. अभी प्रीएम्बल देखते हैं. एक्सेस कोड में 3 पार्ट है. The access first field of frame structure. The access code has a size of 72 bits divided into 3 parts as described. Has a size of 72 bits divided into 3 parts as described. Division into 3 parts. Access code file is segmented into 3 preamble into a preamble of 4 bits. Preamble has 4 bits. So this is overall 72 bits.
जिसमें preamble is 4 bits, synchronization is 64 bits, and trailer is again 4 bits. तो उनका sum is 72 bits. अभी AM address. This structure helps in synchronization or identifying the start and end of the frame. Helps in achieving time synchronization between devices. Fair. अभी packet header. Packet header में क्या है? Packet header is size in 54 bits. Packet header का size है 54 bits. ठीक है, जिसमें से and contains 6 subfields. पहला है AM address. The first AM address, which is size 3 bits in size, can define up to 7 slaves. It can define up to 7 slave. कितना? 7 slaves तो बहुत होता है. Second field is type, of which 4 bits in size and used to identify type of data. Used to define up to 7 slaves. Used to identify type of data. ठीक है, अभी आगे जाता है. आगे क्या है? थर्ड फील्ड इज फ्लो, यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल. थर्ड सब फील्ड इज फ्लो, यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल. फोर्थ फील्ड इज ARQN, यूज्ड फॉर एक्नॉलेजमेंट. फिफ्थ फील्ड इज SEQN, which contains sequence number of frames. Sixth field is HEC, used to detect errors in the header. Last step was payload. This field can be 0 to 2744 bits. 0 to 2744 bits, which is actually the content that you have to pass, and the structure depends upon the type of link established. अभी आते हैं अपन मोबाइल कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर पे. तो मोबाइल कम्युनिकेशंस आर्किटेक्चर मतलब बेसिकली जो मोबाइल कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर जो जिससे तेरे फ़ोन पे इंटरनेट, मोबाइल कॉलिंग वो सब आ रहा है, उसका आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है. तो लेवल 1 इज़ योर मोबाइल स्टेशन. Level 2 is base station subsystem. Each level contains more things inside it. Then there is network subsystem and there is other networks. Other networks पहले कर लेते हैं, तो वो तो लिटरली इंटरनेट हो गया, PLMN हो गया, PSTN हो गया. तो वो सारे बड़े नेटवर्क्स जहाँ से एक्चुअली डेटा एक दूसरे से भेजते हैं अपन. अभी मोबाइल स्टेशन में है अपने पास यूज़र इक्विपमेंट. यूज़र इक्विपमेंट क्या हो गया? तेरा फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया. ऑल दीज आर यूज़र इक्विपमेंट्स. यूज़र इक्विपमेंट इज़ द डिवाइस यूटिलाइज्ड बाय द एंड यूजर्स इन मोबाइल कम्युनिकेशंस, सर्विंग एज इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड द नेटवर्क. UE communications via radio. User interface communications via radio interface with the base station subsystem BSS, playing a vital role in initiating and sustaining connections while within the mobile network. तो यूज़र इक्विपमेंट को कुछ भी कम्युनिकेशन करना रहता है, यूज़र इक्विपमेंट को, तो इट विल ऑलवेज डू दैट वाया रेडियो इंटरफेस. ठीक है, रेडियो इंटरफेस से वो कम्युनिकेशन करेगा. किसके साथ करेगा? बेस स्टेशन के साथ. तो अभी इसको ओवरव्यू देखोगे. यूज़र इंटरफेस कम्युनिकेट्स विथ द बेस स्टेशन वाया रेडियो वेव्स. ठीक है, बेस स्टेशन सब सिस्टम ऑफ कोर्स, BSS. ठीक है, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इनिशिएटिंग एंड सस्टेनिंग कनेक्शंस विद मोबाइल नेटवर्क. The base station subsystem BSS manages radio transmission between mobile stations and mobile switching center. Base station subsystem manages radio, मतलब जो भी radio transmission आ रहा है, BSS will manage that with the help between mobile stations and mobile switching center. तो mobile station और mobile switching centers के बीच में radio transmission को manage करता है. और global system for mobile communication GSM, thus maintaining connectivity between the MS and the NSS. The network switching subsystem.
governs GSM. GSM is Global System for Mobile Communications. GSM is Global System for Mobile Communication. इधर से ही बहुत सारे मिलेंगे अभी तो. ठीक है, इतना हुआ. तो फिर अपन आते हैं enabling communication with diverse networks such as public switch telephone network PSTN, integrated services digital network ISDN, and packet switch data networks. Operating support system OSS allows the operational and maintenance aspects of the GSM, granting engineers the ability to diagnose, troubleshoot, and monitor subsystem parameters to ensure smooth functioning. BSS, Base Station Subsystem. Base Station Subsystem consists of two parts. Base Transceiver Station BTS, responsible for transmitting and receiving radio signals and to and from mobile devices. B. It has radio transceivers and antennas for communication with mobile stations MS over the air interface. Performs critical tasks like modulation, demodulation, channel coding, decoding, power control, and handover to ensure reliable communication. क्या करता है BTS? BTS is responsible for transmitting and receiving radio signals to and from mobile devices. It has radio transceivers and antennas for communication with mobile stations over the air interface. Performs critical tasks like modulation, demodulation, channel coding, decoding, power control, handover to ensure reliable communication. Base Station Controller. Base Station Controller क्या होता है? Base Station Controller acts as a bridge between the BTS and the Mobile Switching Center MS in the core network. Manages and controls multiple BTS within jurisdiction. Base Station subsystem में Base Station Transceiver हुआ, Base Station Controller हुआ. Coordinate operation optimizing radio resource usage. Handles such tasks as call setup, termination, handover management, and frequency allocation. BSC also performs functions like encryption, decryption of communication channels, and signaling of mobility management. Abhi NSS, Network Subsystem. It handles the switching of GSM calls between external networks and indoor BSC. It includes 3 different databases for mobility management such as HLR, Home Location Register, VLR, Visitor Location Register, AOC, ऑथेंटिकेशन सेंटर. अभी इनके बारे में और डेप्थ में जानना है तो HLR क्या है? HLR होम लोकेशन रजिस्टर बेसिकली इट कॉल रोमिंग एंड कॉल राउटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ GSM हैंडल करता है. इट स्टोर्स ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सक्राइबर रजिस्टर्ड इन द नेटवर्क. इट मेंटेन्स यूनिक इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी. और VLR क्या करता है? It is a temporary database, visitor location register. It stores the IMC number and customer information for each roaming and customer visiting specific MSC. Authentication Center, it is protected database. It maintains authentication keys and algorithms. It contains a register called Equipment Identity Register. Functions of MSC are as follows. Call setup, routing, supervision and relays. Collection and billing information, call handling, routing, management of signaling protocol, record of VLR and HLR. अभी आते हैं वायरलेस स्टैंडर्ड्स IEEE. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से अपने को 5 करने के. अभी वायरलेस स्टैंडर्ड्स एंड IEEE ने एस्टैब्लिश किया जिसमें है 802.11 एंड 802.11 with certain X refers to a family of specifications developed by IEEE wireless LAN technology. WLAN. तो 802.11 है स्टैंडर्ड अपना, बट X जो लगा था ना, मतलब जो भी है वो IEEE ने डेवलप किया फॉर वायरलेस LAN. 802.11 specifies an over-the-air interface between a wireless client and a base station or between 2 wireless clients. The IEEE accepted the specification in 1997. 802.1 family only 5 करने अपने को, तो नॉर्मल 802.11 देखते हैं. Applies to wireless LANs and provides 1 to 2 Mbps. Wireless LAN provides 1 to 2 Mbps transmission and 2.4 GHz band.
using either frequency hopping and spreading spectrum FHS or direct sequence spread spectrum DHS. 802.11 an extension to 802.11 that applies to wireless LANs and provides up to 54 megabits in 5 GHz band. 802.11 uses a orthogonal frequency division multiplexing OFDM encoding scheme rather than FHSS or DHSS. मतलब extension है A applies to wireless LANs and provides up to 54 Mbps in 5 GHz band. 802.11 uses a orthogonal frequency division multiplexing OFDM encoding scheme rather than FHSS or DHSS. 802.11b also refers to as 802.11 high rate or Wi-Fi, an extension to 802.11 that applies to wireless LANs and provides 11 megabit transmission with a fallback of 5.2 and 1 Mbps and 2.4 GHz band. इसका एक टेबल होना चाहिए बनाता. 802.11g applies to wireless LAN is used for transmission over short distances up to 54 Mbps and 2.4 GHz bands. भी आते हैं वायरलेस लैन पे. Wireless LAN stands for Wireless Local Area Network. It is also called LAN, Local Area Wireless Network. Fair. LAN is one in which a mobile user can connect to a local area network LAN through wireless connection. The IEEE 802.11 group of standards defines the technologies for wireless LAN. For path sharing, 802.11 standard uses the Ethernet protocol and CSMA/CA, carrier sensing multiple access with collision avoidance. It also uses an encryption method that is wired equivalent privacy algorithm. Wireless LAN provides a high-speed data communication in small areas such as building or an office. LAN allows users to move around in a confined area while still connected to network. अपना घर का network Wi-Fi हो गया वैसा सब. In some instances, wireless LAN technology is used to save cost and avoid laying cable, while in other cases it is the only option for providing high-speed internet access to public. अभी तू केबल लगा सकता है बट उन्हें ठीक है ना, अपने को इतना रिक्वायरमेंट नहीं है तो केबल की जगह वायरलेस राउटर ही लगा देता है. बट इन सम केस दैट माइट बी द ओनली पॉसिबल वे टू गेट डेटा अराउंड. Advantages: flexibility, unrestricted communication with coverage areas regardless of objects and restriction. Planning, enables spontaneous communication without prior setup. Design, supports compact and independent device creation such as small device in the pocket. Robustness, resilient against disasters compared to wired networks. Cost, lower installation cost and maintenance cost than compared to wired LANs. With ease of use, user friendly with minimal additional knowledge is required. मतलब Wi-Fi है क्या, ये सब everyone knows at this point. Disadvantage, quality of service. Quality of service of wireless LAN is typically lower than wireless है तो LAN cable किसी लिए तो लगाते हैं. The main reason for this is the lower bandwidth due to limitations in radio transmission. Proprietary solutions. Due to slow standardization procedures, many companies have come up with proprietary solutions offering standardization functionality plus many enhanced features. Most components today adhere to the basic standards of either 802.11a or 802.11b. Restrictions. Several government and non-government institutions worldwide regulate the operation and restrict frequencies to minimize interface. उनके खुद के भी तो services होते हैं. Global operation. Wireless LAN products are sold in all countries, so national and international frequency regulations have to be considered. हर country की frequency consider करनी पड़ती है. Low power. Devices communicating via wireless LAN are typically power consuming. Also, wireless device running on battery power, where the LAN devices should take into account and implement special power saving modes and power management functions. तो वापस overview मार लेते हैं. तो अभी क्या क्या देखा. वायरलेस कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या है,
ठीक है। ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ प्रोटोकॉल्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, प्रोटोकॉल स्टैक क्या है, ब्लूटूथ फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है। अभी उसमें अभी मोबाइल कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर देखा, उसमें यूज़र इक्विपमेंट देखा, बेस स्टेशन सब सिस्टम देखा, नेटवर्क सब सिस्टम देखा, फिर वायरलेस स्टैंडर्ड्स डिस्कस किया, 5 करने, वायरलेस लैन डिस्कस किया, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किया, और यूनिट 6 ख़त्म।